Hello students, how are you? In this session, we are going to discuss the task 1 of the financial derivatives project, which is on futures. We are going to see how you need to go about to solve for the task 1 for your particular company. So let's begin. Let's take a look, and let me first begin with starting with sharing the task 1. So the task 1 for the course on financial derivatives and risk management is about futures. And this task, as we already discussed in the class, has three parts. The first part is about the contract specifications for your particular company's futures contract. Now, you all have been allotted a company, so you can go to your shared folder, the Dropbox folder, and take a look at what is your company's name. Now, for your company, what you need to do is go to the NSE India's website and look for all of these. You look for the contract specifications over there. So let's do one thing. Let's see how we are going to go about this particular task. So let me just search for NSE. And let's go to NSE India's website. Now on this website, for this particular project, have taken up the company Reliance. So I am going to search for Reliance, and I'm just going to click here. Now, the moment I click here, it shows Reliance Industries Limited and equity, derivatives, and SLB. So तीनों के तीनों segments. So all the stocks on which we have derivatives, there's going to be a section, this particular tab called derivatives. The stocks in which there are no derivatives is just going to be blank. Okay. So now let's go back and try to see what is the requirements for the task 1, or rather part A. So the requirements are the following contract specifications need to be identified by you for your company. But firstly, what's the underlying asset? Secondly, what are the future contracts available? Number of futures contracts available, then maturity dates of the contracts, and so on. So let's start. So underlying asset is Reliance in my case. In your case, it will be your company. Now let's go to the derivatives tab. Now, the moment you click on the derivatives tab, it's going to show you all the stock futures, stock options, stock futures, stock options, and so on. Now, for this particular project, task 1, we are only focused on futures. So we're going to go to click on this and go to stock futures. Now, the moment I click on stock futures, you can see that there are 3 stock futures listed right now: 29th of August, 26th of September, and 31st of October. So this starts with the answering your question about number of futures contracts available. This is 3. Maturity dates of the futures contracts, we already saw: 26th of August, 29th September, and 31st of October. Now, what is the quantity of delivery or the lot size? So this information you can get from NSE's website. Now, for quantity of delivery, lot size, margin, and the leverage provided in the contract, for these 3 things, okay, now we can look for, okay. So now what we'll do is, for this particular information, we'll go to any broker. So Zerodha has nicely arranged this. So you can just search for Zerodha margin calculator. The moment you click on margin calculator, okay, this particular link should open up. Now let's open the margin calculator and search for NFO is NSE's futures and options. Futures, let's search for Reliance. So if I search for Reliance, okay, it'll show me Reliance 29th of August futures, most recent, and then Reliance 31st October, 26th September. So तीनों futures इसने दिखा दिए यहाँ पे. Quantity lot size is 250. Okay, so this is the quantity of delivery or the lot size. Then we look at the margin and the leverage. Now, margin, let's try to add. Let's say we can take any position, buy or sell, really doesn't matter. The moment I click add, it's going to show you the margin. Okay, so now in this case, it's just showing a bit less. Let's try with September futures. Margin थोड़ा सा कम दिखा रहा है. I'm just thinking, what would be, yeah, okay. So today, because it is already 29th of August and I'm looking at the last day, 29th August futures, so obviously वो margin दिखाएगा ही नहीं. I mean, it really doesn't matter.
But you can search for 26 September futures, and that should give you the correct margin. So it's 1,35,609. Okay, so we can approximate it 1,35,600, let's say. So what I have done is for Reliance, I have written the exact same information. Number of futures contracts available 3, and this file has been shared with you on the same shared folder. So you would have access to this particular file. Number of futures contracts 3. Maturity dates, these are the maturity dates. Quantity of delivery is 250. Margin delivered by the exchanges 1,35,000. मैंने approximately लिख दिया. You can write 600 also. So far so good. Okay, so this is still margin. Now we need to figure out the leverage. Okay, what's the leverage provided in this contract? Now to calculate leverage, we need the futures price on 23rd of August. Okay, so now you can look at the futures price, or you can look at the stock price. You can look at anything. So in this case, what I have done, although better is to look at the futures price. So एक काम करते हैं, 23rd August का futures price ही देख लेते हैं, and let's populate that. Okay, so let's see. So now, so what we'll do is we'll go to NSE's website again, and we'll go to historical data. Okay, अब हमें 23rd August का futures price चाहिए. So 23rd August का futures price for August futures. Okay, अब हमारे पास आज 29th August है, तो obviously ये जो price दिखा रहा है ये आज का price है. So this price is not relevant right now. So we'll have to go to historical data. Now the moment you go to all historical data, let this page load up a bit. Okay, so now what we see here is stock futures. You can select which year. Now this is the page for downloading historical data for your futures contract. तो stock futures, यहाँ पर stock options भी है. हमारा काम अभी futures में है, तो futures में रहते हैं. Then we click on the year, and it shows you all the expiries for 2024. 2024 की जनवरी से लेके अक्टूबर तक सारी दिखा दी इसने. So let's look at the 29th August की expiry. Now which date are we looking for? In this case, I only want to see 23rd August को क्या price था, not 24th, 23rd August से. So from which date to 23rd August, एक ही दिन का लेते हैं, and press filter. So filter is the button that you press here to filter the report. So now अब इसने दिखा दिया 29th August expiry futures का जो price है, that is 3005.15. Okay, so 3005 रुपए लगभग closing price था 23 तारीख को, 23rd August को. So let's populate this here, 3005.115. Okay, now the moment I populate this, contract की जो value है वो उसने अपने आप update कर दिया. 3005 multiplied by 250, so 7.5 लाख रुपए का contract है लगभग. और leverage कितनी है? So 7.5 लाख रुपए का contract है, margin है 1,35,000 रुपए. So leverage is, we simply divide. Okay, so the moment you divide, it is showing 5.57 times leverage. So basically 7.5 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको मार्जिन कितना देना है? 1,35,000 रुपए. So you get 5.57 times leverage in this contract. Okay, so this is your part 1. Part 1 is just the basic information. और basic information कहाँ से लेनी है? That is what we were discussing in this video. Now let's move on to part B. Part A is done. Now part B. Now part B is about arbitrage opportunity. Okay, now for part B, what we are doing is we are saying note down the closing price of your company's stock in the spot market on 23rd August. So 23rd August को आप अपने stock का जो closing price है वो सबसे पहले note down कर लो. So let me switch to the part B of this. Okay, so reference date is 23rd of August, and Reliance का जो closing price 23rd of August को था वो था 3005.15. Okay, sorry, not 2999.95. Okay, so 2999.95 was the closing price of Reliance on 23rd of August. Now how did I get this? There are more than one ways. अगर आपके पास broker terminal है तो आप directly broker के terminal से ही access कर सकते हो. Okay, आपके पास Kite है, Angel है, Grow है, किसी भी broker का अगर access है. अगर नहीं है तो we again go back to NSE's website. NSE website पे अब हमें Reliance का historical price चाहिए. अभी तक हम derivatives का देख रहे थे. So let's go to equity. तो Reliance पे अब हम वापस आ गए. यहाँ पर we can see the historical data, and again I can put the date. From which date? From 23rd August to, again एक ही दिन का चाहिए मुझे, 23rd August, filter, and I get the closing price. So this is 23rd August का. What's the closing price? 2,999.95. So that is the price that I have mentioned here, 2,999.95. Okay,
और अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन तीनों फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा आपको अगेन यू गो टू द डेरिवेटिव्स टैब। डेरिवेटिव्स टैब में वी गो टू द ऑल हिस्टोरिकल डेटा। हमें हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, वही प्रोसेस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। एंड नाउ अगेन स्टॉक फ्यूचर्स, लेट्स लुक फॉर 2024 एक्सपायरी डेट, लेट्स से सितंबर, इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ। एंड वी कैन लुक एट सितंबर फ्यूचर्स का 23 अगस्त को क्या क्लोजिंग प्राइस था। ओके, सो वील डू फिल्टर एंड 23 अगस्त को जो सितंबर फ्यूचर्स का जो प्राइस था क्लोजिंग, that was 3022.1. Mind you, we are not concerned with the last price. We are more looking at the settlement price or the closing price. So you can look at the closing price, 3022.1. Okay, so 3022.1 is the September future. Similarly, you can look for the October futures. So these are the closing prices for our Reliance August, September, and October spot and see futures के closing prices आ गए. So this is your note down the closing price. Now the expiry date. So now what we are required to do is to calculate the theoretical futures price using the relation futures price is spot price into e raised to the power RT. Okay. Now how do we calculate this? First thing we need is the expiry date. Expiry date हमारी इसकी 29 है, 26 सितंबर और 31 अक्टूबर, ये हम ऑलरेडी पीछे ले चुके हैं। और कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी के? सो 29 अक्टूबर वाले को 29 माइनस 23 6 दिन बचे हैं, सॉरी अगस्त वाले को 6 दिन बचे हैं। सितंबर वाले को यू कैन डू द काउंट और एक्सेल में यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट। ओके, सो 26 सितंबर माइनस 23 अगस्त, अपने आप उसने 34 डेज बता दिया। अक्टूबर वाले का अगेन सिमिलरली यू कैन डू द सेम थिंग, या आप काउंट भी कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ डेज दैट आर लेफ्ट फॉर ईच ऑफ दीज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेज and the closing price of the stock, we calculate the futures price. So futures price is calculated as spot price 2999.95 multiplied by e raised to the power RT. Now e in Excel is function of exp. So there is a function called exp. So if you just type equals to exp, it will give you the exponential function. Okay, so what you need to do is equals to spot price multiplied by exponential function. You can start the bracket r into t. What is the time? 6 in this case divided by 365. Okay, so time हमेशा हमें years में लेना है. So this is this. So this is 3003.4, which is जो हमारे सामने आ गया. Okay, so this is exactly same calculation, and this calculation is done for all of these 3 years, all of these futures, 3 futures contracts. Okay, and then we can look at the difference कि actual price वो 3005, theoretical price है 3003, तो difference कितना है? 1 रुपये 75 पैसे का है. अगले वाले का ₹2.5 का डिफरेंस है, तीसरे वाले में ₹2 का डिफरेंस है, 3042 3039.91. ओके, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट डिफरेंसेस. नाउ दिस इज फाइन. अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतने कम डिफरेंस में आपको कोई बहुत ज्यादा आर्बिट्राज बनेगी नहीं. सो व्हाट आई हैव डन इज, एंड दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू टू डू, अगर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, अगर डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है एक्चुअल माइनस थियोरेटिकल में, तो यू कैन सिंपली एग्जीक्यूट द आर्बिट्राज. लेकिन अगर नहीं आता है, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अज्यूम्ड कि अगर एक्चुअल प्राइस जो अगस्त फ्यूचर्स का है वो 3005 ना होके 3005 से 1% ज्यादा होता. ओके, सो 3005 इंटू 1+1%, बेसिकली 1.01 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सो दिस वुड बी 3035. ओके, सो अगर ये प्राइस 3005 ना होके 3035 होता, 1% ज्यादा होता, तो हम कैसे आर्बिट्राज एग्जीक्यूट करते? ओके, सो व्हाट वी वुड हैव डन इज, ऑगस्ट फ्यूचर्स इज एक्सपेंसिव, 3035 रुपए है, बट बाय द वे ये था नहीं, एक्चुअल प्राइस 3005 था, बट हम ये अज्यूम करें कि इफ एक्चुअल प्राइस was 3035.2. okay, then what? Then August futures is expensive, so arbitrage will be buy the spot, sell the futures. okay, so आप spot market को में खरीद सकते हो और sell और futures market में sell कर सकते हो. okay, so this is your arbitrage. Now how do you execute it? All of that process is here. So you say arbitrage execution on 23rd August. 23rd August को हमने arbitrage execute करी, let's say लास्ट में closing से just 1 मिनट पहले. So spot price में हमने buy कर लिया, स्पॉट को बाय किया 2999.95 पे. क्वांटिटी कितनी है? 250 शेयर्स. तो टोटल बाय अमाउंट इज, मल्टीप्लाई दिस टू 7,49,987. इतना ही अमाउंट एग्जैक्टली हम बोरो कर रहे हैं. ओके, दिस इज द आर्बिट्राज मैकेनिज्म जो हमने क्लास में डिस्कस किया था. कितने पीरियड के लिए? 6 दिन के लिए. इस वजह सिर्फ 6 दिन के लिए बोरो करना है हमें. रीपे करना है जो 6 दिन के बाद, दैट विल बी अगेन दिस बोरो अमाउंट इनटू e raised to the power RT. okay, so वही सेम चीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर लगाया है टू रीपे दिस. इंटरेस्ट
अब तो हमारा 7.5 लाख रुपए, 7,50,851 रुपए रीपे करने हैं, 7,49,987 रुपीज बोरो किए, सो डिफरेंस इज 863. सो दिस 863.5 रुपीज इज योर इंटरेस्ट. ओके, देन साइमल्टेनियसली, सो हमने स्पॉट में खरीदे 250 शेयर, साइमल्टेनियसली फ्यूचर्स में बेच दिया. सो फ्यूचर्स जो बेचा हमने वो इस रेट पे बेचा 3035 पे. ओके, इस पे नहीं, 300 3005 पे नहीं, 3003 पे भी नहीं, हमने इस रेट पे बेचा, इस प्राइस पे, क्योंकि ये हमारा, हम ये प्राइस मान के चल रहे कि अगर ये होता तो कैसे आर्बिट्राज होती. क्वांटिटी टू सेल इज 250, वही सेम क्वांटिटी, और मार्जिन हमें पता ही है 1,35,000 जो हमने पहले कैलकुलेट किया था. ठीक है, अब इसमें देखते हैं आर्बिट्राज कैसे फाइनल होगी, कंप्लीट होगी. सो यही आर्बिट्राज जो 23 तारीख को एग्जीक्यूट हुई है वो 29 अगस्त को कंप्लीट होगी. ओके, सो 23 को आपने स्टार्ट करी, 29 को कंप्लीट कर लिया. अगस्त अगस्त फ्यूचर्स एक्सपायरी 29 अगस्त, इसलिए 29 को हमने कंप्लीट किया है. नाउ एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस इज द स्पॉट प्राइस विच कैन बी एनी ऑफ दीज थ्री. ओके, 29 अगस्त को स्पॉट प्राइस जो है वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता. कैन बी 2950, 3000, 3050, वी रियली हैव नो आइडिया. ओके, एंड इट डजेंट रियली मैटर स्पॉट प्राइस क्या है, उससे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है. अगस्त फ्यूचर्स प्राइस वुड बी सेम, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो अगस्त फ्यूचर्स का प्राइस वही रहेगा जो स्पॉट प्राइस है, यही मैंने कमेंट्स में मेंशन किया हुआ है. सो P&L वुड एट एक्सपायरी वुड बी, यू सेल द स्पॉट. सो स्पॉट को अब जो हमने खरीदा था, नाउ वी सेल इट एट एक्सपायरी. सो इन द फर्स्ट केस, अगर इफ द स्पॉट प्राइस वाज 2950, वी बॉट एट 2999.95, सो देयर इज रफली 50 रुपए का नुकसान है. 3,000 रुपये खरीदा तो 2950 में बेचा, तो 50 रुपए का नुकसान है, मल्टीप्लाइड बाय 250. ओके, सो दिस इज योर लॉस इन केस ऑफ 2950. अगर स्पॉट प्राइस 3,000 में होता तो वही लगभग वही 12 रुपये, 12.5 रुपये का प्रॉफिट है, और 3,050 होता तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट. ओके, दिस इज व्हेन यू सेल द स्पॉट, जो आपने स्पॉट में खरीदा था उसको बेच दिया. साइमल्टेनियसली वी बाय द फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स को हमने सेल किया था, तो अब हमने फ्यूचर्स को बाय कर दिया, वी रिवर्स द पोजीशन. सो व्हेन यू बाय द फ्यूचर्स, नाउ योर प्रॉफिट विल बी, यू सोल्ड एट हियर एंड यू बॉट हियर. तो 3,035 पे बेचा, 2950 पे खरीदा, सो देर इज अ प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 250. सो दिस इज 21,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर, 8,800 का यहाँ पर, और 3,006, ऑलमोस्ट 3,700 का लॉस यहाँ पर. So we can calculate the gross P&L, which is sum of these two. Sell spot plus buy futures का gross P&L हो गया 8812, which is same in all the three cases. Interest paid जो वो हमें already पता ही है 863.5, वो ऐसा कैसा हमने यहाँ से उठा लिया. Interest paid in all three cases. The net P&L will be gross P&L minus the interest that we pay. Okay, which is again coming out to be the same in all three cases, which are roughly 7,950 rupees. So 7,950 रुपए का आपका profit, net profit इस particular arbitrage में बन रहा है. Okay, this is your part 2 of the exercise. Now this 7,950 can also be obtained through a shortcut, which is 3035 minus 3003, जो भी difference है, multiplied by 250. Okay, so if you just take the difference and multiply by 250, you will also get the same amount, which would उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, now let's move on to part number C. Now what is part C? Part C is about mark to market. So here what we are doing is we are looking at how would we execute the mark to market for our stock. Okay, so how would the mark to market happen? So now in this case what we need is we need the data for a range for more than one day, क्योंकि mark to market तभी होगा जब आप futures को एक दिन से ज़्यादा hold करके रखोगे. So over here what the assignment is or the task is that you download the historical data for August futures for your stock from the NSE website, and the data is to be downloaded from 1st August to 23rd August. Okay, so 23 days का data minus the weekends and public holidays जो भी है, and data can be downloaded through this link. Okay, so now you can just press control and just press on this link, and in your browser this particular link will come about and open. Okay, so now this is the again same NSE's website, historical data. Now this is a generic page. Okay, अगर आप so यहाँ पर आप अपने इंस्ट्रूमेंट सर्च कर सकते हो. so this is the generic page. हम जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज का सर्च करके हम रिलायंस के डेरिवेटिव्स के हिस्टोरिकल डेटा पे जो हमने पहले डिस्कस किया था. Now you can download historical data from either of these two. Frankly, it doesn't matter at all. So you can either click on this link and go to this generic page, or अगर आपने ऑलरेडी एनएससी की वेबसाइट पे अपना स्टॉक सर्च करके उसके हिस्टोरिकल डेटा पे आए हुए हो तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम थिंग. ओके, इनफैक्ट सो यहाँ पर यू विल जस्ट चेंज द डेट, 1 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक हमें
अगस्त फ्यूचर्स का डेटा चाहिए. So I can just press filter and I have the whole data from 1st August till 23rd August. Expiry is August 29th August wali, and we can take the close prices. Okay. So this is directly from your stocks page. अगर हम इस लिंक से स्टार्ट करेंगे तो we'll search for first we'll have to select the instrument which is stock futures. Next we have to select the simple symbol. So here you can search for R and then just scroll down and look for your stock. I'm looking for Reliance. Here it is. So Reliance. Then I'll select the year. बहुत सारे इसमें साल आ गए 2024. So the flexibility here is you can download historical much more historical prices also. Okay. So we'll start with 2024. एक्सपायरी अब अगस्त की सॉरी इस साल की सारी एक्सपायरीज आ गई. सो 29 अगस्त 2024 एंड ऑप्शन हमारा है नहीं तो वी नॉट कंसर्न विद दिस एंड अगेन सो वी नीड द टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड के लिए बाय डिफॉल्ट ये 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ्स बोल रहा है. वी नीड कस्टम. अगेन वी स्टार्ट द डे फ्रॉम स्टार्ट डेट इज 1st of August till end date is 23rd. Okay, so 1 से लेके 23 तक we press go and it gives us Reliance 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त से लेके 23rd अगस्त तक. Expiry is 29th August, August expiry, open, high, low, close, LTP and so on. So we are concerned with the close price. Okay, so this particular page and जो हमारा पहले वाला पेज था ये वाला, this particular page are going to give you the exact same outcome. यहाँ पे 23rd अगस्त पहले 1 अगस्त लास्ट में है और वहां पर 1 अगस्त पहले 23rd अगस्त लास्ट में. So it's not going to make any difference. Okay, you can take it from anywhere. Now what we'll do is we'll download this file and you can download it in your whichever folder you like. And the moment it's downloaded, we can open this particular file. Okay, so now the moment you open this file and we have 1st August से लेके 23rd August. So you can copy this date and you can copy the close price. Okay, now I have already copied, so let me just show it to you. It's here. So this is taken from NSE's website, the date and the close price. Okay, both items are available here. Okay, so now let's look at what we need to do. So first step is done. You downloaded the data. Now in this case, now what we are required to do is again mark to market. So mark to market हमें calculation करना है आपके स्टॉक का 1 से. So now what we are doing is we are saying अभी हमारे पास 1 से लेके 23 अगस्त 23 डेज का ये डेटा है. ओके, इनफैक्ट वी कैन क्विकली वेरीफाई एंड आफ्टर डाउनलोडिंग कॉपी पेस्ट करने के बाद इस फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं. इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है. वी डोंट इवन नीड टू सेव इट क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. Okay, so once you have taken this, now this is what you have. So now this is data for 16 days. Okay, 16 वर्किंग डेज से 1 से 23 अगस्त के बीच में. So 16 वर्किंग डेज का हमारे पास ये डेटा है. Now now what is this assignment? The assignment is saying for the period of 1st to 12th August, पहले 1 से लेके 12 अगस्त के बीच में जो 12 दिन है minus the weekends, you are required to compute the mark to market profit loss in for long position of the futures contract. Okay, long position. And for the period of 13 to 23rd August, 13 से लेके 23 अगस्त के जो 10 दिन है minus again the weekends and so on, you are required to compute the mark to market position for profit and loss in the format discussed for the short position. Okay, so पहले 12 दिन हम long position बना रहे हैं, अगले 10-11 दिन हम short position बना रहे हैं. Okay, this is what we are ultimately doing. So let's see. Let's just take a look at it for the long position. Short position के लिए उसका बिल्कुल reverse हो जाएगा. So long position के लिए now what is the criteria? The start date for long position is 1st August. End date is 12th August. Start date for the short position is 13th August. End date is 23rd August. ठीक है. Now what's the entry price? हमने enter किस rate पे किया है? Okay. So now when we are looking at the long position, we're saying start date or the entry date on the long position is 1st August. What is the entry price? Now the entry price for the long position will be open price on 1st August. Okay, and long position is closed on the 12th August at the close price. So open price on 1st August is the entry price. So let's see. So this is the again open price on the 1st of August. Okay, in fact download. So अभी close नहीं करनी चाहिए थी फाइल. इस फाइल की जरूरत अभी पड़ेगी. Looks like. Yeah. Okay. So now, 1st August का open price is 3031.95.
This is 3031.95. So 3 months is open price on 1st August. Okay. Quantity is 250 shares. ये हम already ले चुके हैं. Number of contracts is 1. Initial margin 1,35,000. ये हम already ले चुके हैं. Okay. Now we need to calculate the mark to market. Mark to market के लिए 1 से लेके 12 अगस्त तक का क्लोज प्राइस सीधा सीधा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया 1 से लेके 12 अगस्त तक का क्लोज प्राइस. ओके. सो वंस वी हैव कॉपीड दिस, नाउ वी कैन कैलकुलेट द मार्क टू मार्केट. मार्क टू मार्केट इज 3031.9 minus 3031.95. दिस इज मार्क टू मार्केट फॉर वन लॉट. ओके. पर कॉन्ट्रैक्ट इज वही ये जो एक लॉट का मार्क टू मार्केट है टाइम्स 250 नंबर ऑफ शेयर्स. हमारे केस में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है. सो द मार्क टू मार्केट फॉर योर पोजीशन विल बी सेम एज मार्क टू मार्केट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. ओके. विच इज माइनस 12.5 रुपये. और मार्जिन जो है फर्स्ट डे विल बी 1,35,000 माइनस 12.5 रुपीज विच इज 134,988. ओके. सेम फॉर द सेकेंड डे, mark to market will be now 2,997 minus 3,031.95. Okay, so this is minus 34.9. For the contract, minus 34.9 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज minus 8725 and the daily margin is now 134,988 minus 8725 which is 126,263. Okay, and so on. So this whole process repeats for all of these days till 12th of August, and finally this is your total mark to market for the whole position. And if you take the sum of all of these, it will give you the total profit for the long position, which is 27,912 rupees ka loss. Okay. So in this case, the PNL is a negative PNL of 27,912 rupees. Basically, आपने enter किया 3,031 पे और final close हुआ है आपका 2,920 रुपए पे. So लगभग 100 रुपए का नुकसान है. Okay. वो 100 into 250 is 25,000. सो वही 27,912 रुपये. तो बेसिकली आपका नुकसान हुआ है. अगर किसी ने खरीदा होगा 1 अगस्त और 12 अगस्त को बेचा होगा तो उसका 100 रुपये पर लॉट का नुकसान है, विच इज रफली 27,912 रुपीज. द रिवर्स विल बी द केस फॉर द शॉर्ट पोजीशन. शॉर्ट पोजीशन में एग्जैक्ट ऑपोजिट है. एंट्री डेट हमारी, अब वी कैन अगेन गो बैक एंड सी. एंट्री प्राइस फॉर शॉर्ट पोजीशन इज ओपन प्राइस ऑन 13th August and the short position is closed on 23rd August at the closing price. Okay, so now we can look at the open price on 13th August. अब 13th August को open price क्या था, अगेन यहाँ से मिल जाएगा हमें. 13th August open price is 2925.45. ये वही शीट है जो हमने डाउनलोड करी थी. So 2925.45. Okay, quantity is 250, number of contracts, initial margin सब exactly same है. Short position के लिए the only difference will be that short position में your PNL will be reverse. सो अगर प्राइस गिर रहा है 29.25 से 29.24 हुआ तो ये प्रॉफिट है शॉर्ट पोजीशन का. सो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2925 ओपन प्राइस माइनस द क्लोज प्राइस. ओके, दैट इज गोइंग टू बी, सो इट इज 2925.45 माइनस 2924.9, दैट इज 0.55. इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दिया. एक ही कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड आवर डेली मार्जिन विल बी 135,000 प्लस 137.5 विच इज दिस. डे 2 पे अगेन प्राइस 2924 से 4 रुपए और नीचे गिर गया 2920 पे. सो दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ 4.6 रुपीज. सो 2924.9 माइनस 2920 पर कॉन्ट्रैक्ट इज 4 into 250. 4.6 into 250 1150 रुपए. एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास तो 1150 रुपए. सो मार्जिन विल बी 135 138 प्लस 1150 विच इज 136 288. ओके, सो द सेम प्रोसेस विल रिपीट ऑल द वे टिल द एंड. एंड इंटरेस्टिंगली इन दिस केस शॉर्ट पोजीशन वाले का भी नुकसान है अगर हम पूरा का पूरा उसको ऐड पीएनएल को ऐड करें तो, क्योंकि बीच में प्राइस जो है वो बढ़ भी गया है. ओके, सो इनफैक्ट इफ वी लुक एट द ग्रॉस पोजीशन 2925 पे आपने एंट्री करी और 3005 पे आपने एग्जिट करी. तो आपने बेचा 2925 पे, खरीदा 3005 पे, तो ये 70 रुपए का लगभग नुकसान हो गया. ओके, एंड दैट इज व्हाट इज शोन हियर माइनस 19,925 का लॉस. So this is the part C of the project, which is of this task 1, which is about mark to market. Okay, so now you have a brief idea. Let me just stop this. So now you have a brief idea about what is to be done on each of these parts of the project task 1, which is on futures. And I've also shared the exactly same Reliance Valley file on the shared folder so that you have access to it and you can use this for your reference. Okay, so that would be it for this video. I hope you enjoyed it, and I hope that you follow these steps
and do your task one sincerely on your own. And I wish you all the good luck. Thank you. Have fun. Bye bye.